अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीमेन। इसके बाद में हमारे जो अगले परफॉर्मर है वो करीबन 4-5 साल से कतार में है। आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो बड़े उत्साह के साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्लीज जॉइन मी टू वेलकम और नेक्स्ट परफॉर्मर मिस्टर राजेश कांबळे जी। राजेश कांबळे जी। सगळ्यांना जय भीम। Thank you, sir. I congratulate all Choti parties. They have given a wonderful performance. I am Rajesh Kamble. It's been 3 years I am working here in Qatar, basically from Warda district. I thanks to all to provide me this opportunity to talk on this occasion and festival. Thanks to our honorable guest also, Professor Mr. Nitish sir and Professor Mr. Ravi sir, for showering their knowledge on us. We are the people who can say lots about our forefather, his life, his affection towards our country, especially towards people of our community. आणि एक गाणं जे इथे सार्थक होईल असं मला वाटतं ते म्हणजे उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. Our chief architect and father of our Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, यांना मी कोटी कोटी नमन करतो. आणि तसंच एक कवी नामदेव ढसाळ यांनी पण एक कविता लिहिली होती आंबेडकरांविषयी. त्यातली काही लाईन आहे जे आज आमचे जे काही आहे ते सर्व तुझेच आहे. हे जगणे आणि हे मरणे, हे सुख आणि हे दुःख, हे स्वप्न आणि वास्तव्य, ही भूक ही तहान, सर्व पुण्याई तुझीच आहे. This is very proud day for all of us, and on this occasion सगळ्यांना माझ्याकडून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. Literally, I will talk only on a 3 point generally that might be everyone already aware of. That is, first, why there was a need of constitution, what is the constitution, and some people misconception on the constitution. Everyone knows why there was a need of constitution and what is the constitution is. I request you all to spare a few minutes for me to talk on this. So why there was a need of constitution? As far as my knowledge is concerned, most of the country believes that democracy would be the base form of our government, where people will be the ruler. India, after becoming the independence, had chosen the democratic country. To get this country ruled by a democratic government was not easy. Hence, there was a need of constitution. Constitution, Bharatiya Samvidhan. This is the supreme law of India. And if I'm saying supreme law of India, it means the constitution, which is having the set of rules that government must follow in their rule. A principle which is the country we govern, and mostly the rights of citizens that government must protect. My dear friends and listeners, in this male-dominated culture, women cannot become Masjid Maulvi. She cannot become temple priest. Even she cannot become church father. But she can become our India's president, prime minister, MP, MLAs. Why? Only because of our Indian Constitution. हमारे भारत में सभी धर्मों में एक ही ग्रंथ होता है जो उनके धर्मों के लोगों को, मतलब हमारे भारत में जितने भी धर्म है सभी धर्मों के लिए अलग एक एक ग्रंथ होता है, राइट. सो जो लोगों को उनके धर्मों को फॉलो करने की सीख देता है. पर इन सभी को एक संघ रखने के लिए हमारे बाबा ने हमारे भारत को एक संविधान दिया है. At the end, I need to focus on one point. Due to the lack of some people's misconception on the constitution that you are aware of, but I suggest them, before raising any false statement, they must study the constitution.
To prepare our constitution, Dr. Ambedkar studied multiple governments' constitution, such as Australia, Canada, France, Ireland, Japan, South Africa, Soviet Union, US, UK, and Weimar Republic. So after long study, he took some influence of this government constitution, which will suitable for our India. And it is not easy task to do, right? People may have different view on this, and I appreciate and thankful if they spread their knowledge to here. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे एक अनमोल वचन जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा. In our country, most people or children, they don't know the importance and power of this constitution. And I admit, I also one of that person who don't know much about our constitution, and I will try to learn it. Also, I suggested already our Mr. Professor Ravi sir already suggested that I am also in favor of that, and suggest our government should make a compulsory subject on the as Bharatiya Sanvidhan in their school syllabus. शेवटी एक कधीतरी वाचलेली ऐकलेली लाईन ऐकवतो आणि मी इकडेच थांबेल. आले किती गेले किती, आले किती गेले किती, उडून गेला भरारा. आले किती गेले किती, उडून गेला भरारा. संपला नाही आणि संपणार पण नाही माझ्या भीमाचा दरारा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना कोटी कोटी नमन करून मी इथेच थांबतो. जय भीम. बहुत बहुत उत्तम सर, ओवर टू यू. हाँ जी, बहुत ही सही जानकारी दी सर. उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. मतलब ये एक महामानव कोटि कोटि लोगों का उद्धार करता है, और जो एजुकेशन नाम का जो ये कुछ भी ज्ञान, या जो मराठी में है ना कि गुरगुल्याशिवाय राहणार नाही, जो इस दूध को प्राशन करेगा, बहुत सही जानकारी दी है. और बस बहुत सारे लोग देखे हमने कि बस इंडिविजुअल के लिए करते हैं, बट बाबा साहब ने कोटि 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 के लिए किया. उन्होंने इवन अपने जो नियर एंड डियर वंस जो फैमिली मेंबर्स थे या उनके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं देखा उन्होंने. उद्धरली कोटि कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. बहुत सही आपने कहा सर जी. हम चलते आगे. अभी हमारे साथ में जो अगले परफॉर्मर है वो बेसिकली मुंबई से है. बड़े मोटिवेटर है, बड़े हंसमुख है. जब भी कोई सीरियस हो तो उनको उनके होठों पे कैसी हंसी लाई जाए. और कवि है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है. पता नहीं आज भी बैठे बैठे कि जरूर कुछ बनाए होंगे उन्होंने, कार्टून बनाए होंगे. और उनकी जो एक कार्टून होती है, एक जो पिक्चर होता है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होता है. बड़े सोशली एक्टिव है, चाहे वो